गाइस एक बहुत ही ट्रैजिक न्यूज़ है। जॉर्जिया यहाँ पर अमेरिका में एक स्टेट है, वहाँ से है और अबाउट 5-6 दिन पुरानी एक न्यूज़ है जिसमें एक इंडियन पायलट जो खुद ही एक पायलट है, उसकी अपने वेडिंग डे पर ही उसकी हेलीकॉप्टर क्रैश में उसकी डेथ हो गई। वेरी ट्रैजिक न्यूज़। मैं जब ये वीडियो देख रहा था, सुन रहा था, मुझे बहुत बुरा लग रहा था, पर मुझे न्यूज़ स्टोरी आप तक पहुँचानी थी, आपको बताना था क्या हुआ, कैसे हुआ। पहले आपको रिपोर्ट दिखाता हूँ, फिर आगे बात करते हैं। New at 10, a perfect wedding marred by tragedy. A Gwinnett County groom dies in a helicopter crash only hours after saying "I do." His new bride is recovering in the hospital tonight. Atlanta News first Justin Berger sat down with the groom's grief-stricken father. He reports for us tonight. Fiji George recounts the impossible. He was crying on the phone. What happened? What happened? I didn't know what was he talking about. It's 6:30 Saturday morning. His son, Dave Fiji, married the love of his life, Jesney, only hours earlier at the Revere in Dawsonville. My son was so happy. The couple met through church, friends who decided to become life partners, Dave's father says. He watched, beaming, as his son and new bride boarded a Robinson R-66 helicopter bound for DeKalb Peachtree Airport for a spectacular send-off in front of their loved ones. The helicopter never made it to their destination. तो ये स्टोरी है डेव फिजी की, जो 25-26 साल का लड़का बता रहे हैं इसमें, और वो अपनी एक पुरानी ही फ्रेंड से शादी कर रहा था। ये सैटरडे, जो अभी सैटरडे गया है रिसेंटली, उसी दिन शादी हुई है इनकी। एंड वहाँ से शादी के बाद जैसे सेंड ऑफ होता है ना, जैसे विदाई होती है, हर कोई एक ग्रैंड विदाई चाहता है, राइट। इन्होंने हेलीकॉप्टर रेंट किया था और हेलीकॉप्टर वहाँ पे मिलते हैं, इसी काम के मिलते हैं कि कुछ भी ओकेजन हो, कुछ भी आपकी पर्सनल इवेंट हो, आप उसके लिए रेंट कर सकते हो। तो इन्होंने रेंट किया था और विदाई उसमें करनी थी इन्होंने, सेंड ऑफ जो होता है। बट बहुत ही क्लाउडी था वो दिन और बारिश भी हो रही थी, तो समहाउ लाइक विजिबिलिटी बहुत कम थी। एंड डेव फिजी जो एक ग्रूम था, वो खुद ही एक पायलट था डेल्टा एयरलाइंस में, तो उसको पता था कि ये साफ ज़ीरो विजिबिलिटी है, वी कैन नॉट फ्लाई, वी शुड नॉट फ्लाई। बट स्टिल पायलट ने इंसिस्ट किया और ये फ्लाई किया एंड द हेलीकॉप्टर क्रैश्ड। डेव खुद पायलट नहीं था, खुद नहीं उड़ा रहा था हेलीकॉप्टर, एक पायलट था, डेडिकेटेड पायलट था, पर उस पायलट की ही गलती से ये लोग फ्लाई करे और हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया ओनली आफ्टर फ्यू आवर्स। It took them a while to locate the helicopter itself. The helicopter crashed not far away from the wedding venue. She was under the rubble for almost 6 hours. Jesney survived. Dave and the pilot did not. And she said when she woke up, she saw my son Dave resting on her bosom. She saw blood on him, but by the time his body was completely cold. So she knew, she's herself a nurse, so she knew he was gone. She's devastated, but she's recovering. Jesney has no broken bones, just cuts and bruises. From a hospital bed hours after their wedding, she is the one that told her father-in-law that his son, Dave Fiji, did not survive the crash. From age 10, his passion was airplanes. He lived his dream, a first officer for Delta. So on Friday night, as the rain moved in, Dave prepared to get on the helicopter. Since my son being a pilot, he told the pilot that there is zero visibility. When there is zero visibility like this, we never fly. The NTSB has not yet determined what caused the helicopter to go down. In the short time since their son's death, his family leans on their Christian faith. Without God, there will be many questions. Why, right? God has granted us a perfect wedding, and within few hours, everything changed into tragedy. But only we can find answer and peace in God. Where else can we go to? मुझे सीरियसली ये सुन के भी बहुत बुरा लग रहा है, मुझे तो काइंड ऑफ रोना भी आ रहा है सुन के। और कितना कामली, कितना पीसफुली डेव के जो डैड है फिजी जॉर्ज, कितना बता रहे हैं स्टोरी विदाउट एनी टीयर इन हिज आइज, क्योंकि बहुत रीसेंट फ्रेश न्यूज़ है, राइट। इतनी बड़ी बिग डील है उनके लिए। उनका बेटा जिसकी शादी थी और उसी दिन उसकी डेथ हो गई प्लेन क्रैश में। इट्स सो हॉरिफिक सीन, बहुत बुरा लग रहा है मुझे ये सुन के, ये इमेजिन करके, और उनके ऊपर क्या बीती है, फिर भी वो कितना कामली बता रहे हैं। एंड द फैक्ट कि वो गॉड में कितना बिलीव करते हैं, रिस्पेक्ट। मैं ये बताना चाहूँगा कि जैसे इस रिपोर्ट में बता रहे हैं ना कि इनको नहीं पता लगा हेलीकॉप्टर क्रैश कैसे हुआ। मैं काफ़ी रिपोर्ट्स आगे देख रहा था, वीडियोस, उसमें मैंने एक रिपोर्ट में ये देखा है कि हेलीकॉप्टर एक्चुअली लंबे लंबे पेड़ थे, उनमें क्रैश हो गया।
तो बिकॉज ज़ीरो विजिबिलिटी थी, क्लाउडी था, बारिश थी, सब कुछ मिला के वो एक कुछ पेड़ों में क्रैश कर गया। और जो जेस्नी थी वो पेड़ों में काफ़ी देर तक 5-6 घंटा तक वहीं पर ही टंगी रही और बाद में जाके उनको रेस्क्यू किया गया। एंड विदाउट एनी ब्रोकन बोन्स, ओनली विथ ब्रूजेस एंड स्क्रैचेस, शी सर्वाइव्ड. It's not less than a miracle. He was a precious child. It's a gift of God for us. When he was a God-fearing child, he was so handsome, beautiful. And what a beautiful wedding it was Friday at the Revere wedding venue outside Dawsonville. Fiji George's son, Dave Fiji, was 25 years old and glowing. He met his bride, Jesney, a nurse, a decade ago at New Testament Church. We could say it was a perfect wedding. Perfect wedding. We couldn't ask anything more. Faba Fiji is Dave's mom. Both of them told us that they could sense the presence of God at the altar, a tangible presence of God. The reception wrapped up around 9:30. The bride and groom were to leave on a helicopter to Peachtree DeKalb Airport, then spend the night in a hotel in downtown Atlanta. It was rainy and foggy. The groom was himself a pilot at Delta, and his dad says his son expressed concern about flying with such low visibility. He said, I wouldn't fly, or we would not fly in this visibility. But he says the pilot decided to fly at a higher altitude. Shortly after takeoff, the Robinson R-66 helicopter crashed in a densely wooded area with steep hills in southwest Dawson County. Dave Fiji and the pilot died. Jesney was trapped in the wreckage and trees for 5 hours. वेरी सैड न्यूज़, बहुत ही ट्रैजिक न्यूज़ थी, मुझे भी बहुत बुरा लगा सुन के. मे गॉड गिव पीस टू द फैमिली, रेस्ट इन पीस डेव. अ ट्रैजिक न्यूज़ जो वेडिंग के बाद ही, अब कुछ घंटों बाद ही एक ट्रेजेडी में बदल गई. मैं वीडियो बंद करता हूँ गाइज. आई हैव नथिंग मोर टू से, नथिंग मोर टू शो यू इन दिस वीडियो. वीडियो बंद करता हूँ, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में. बाय गाइज.